Start over. Okay, good afternoon, friends. So this was the screening test. YouTube पे comments चल रहे हैं? Okay. So you would have seen that the questions that we chose, they were all PYQs. All of them were PYQs. As we talked about before, it was just a screening test, a kind of icebreaker, a kind of something to break your inertia towards writing. Very important thing is that the numbers which I can see right now who have come to write the test, it again proves my theory. And what is my theory? Majority of the people who are preparing, and I'm talking about this majority being 99%, they are daydreamers. When it comes to implementation of the things which you have thought or which you have planned, नहीं होता. सब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लिविंग इन अ वेरी आई वुड से फूल्स पैराडाइज. एंड एक तरह का आइडियलिज्म है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु डिडंट कम, इवन दोज हु आर एनरोल्ड फॉर द टेस्ट सीरीज, दे वुड हैव थॉट वन थिंग कि पूरा सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे यार, अभी तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं है. So why to go and essentially write the test? बाद में लिख लेंगे, और वो बाद कभी आता नहीं है. We see, you can understand, वो बाद के चक्कर में there are institutes which have become too much big. Vision IAS is an example. People join to write 24 tests. Hardly they write 6-7. बाकी जो सारा पैसा है वो प्रॉफिट हो जाता है उनका. Believe me, if students write all the tests, people will not be earning from the test series. But this is the kind of idealism that majority of the students have. You will not understand this, that even when I am writing something in the examination, when I am going and writing the questions and answers, it is a kind of practice. और टेस्ट सीरीज में टॉप करके आप IAS नहीं बन रहे. What is the most important aspect of the test series is test series has two roles. One, it is a learning process. So when you will write tests, many things you might not be knowing, and when you will see the answers and the content related with that, you will learn it. So it is a kind of learning process. Second important role of the test series is that what mistakes you would have otherwise done in the examination, those mistakes you will do in the test series. So essentially you will be learning from it. If you are having any other role of the test series, I am not very much aware of that. टेस्ट सीरीज में टॉप करके किसी का IAS में सिलेक्शन नहीं होता. इनफैक्ट मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो और अलग सी हैं. वी फाइंड दैट the selection occurs from across. The people who are also average performers in the test series, they also get selected. People who are top performers in the test series, it is not necessary that they will get selected. It is not necessary. Some of them do get selected, but not all of them get selected. So take it as just a kind of opportunity for practice. बिकॉज जिसने भी अभी यहाँ पे प्रैक्टिस किया होगा कुछ तो सीखा होगा ना यार, कि क्या मिस्टेक्स किए हैं. अभी मैं जब उसका डिस्कशन करूँगा, अभी व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस, यू विल रियलाइज कि कितना इजी था, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स इफ आई जस्ट वुड हैव थॉट लॉजिकली कुड हैव बीन आंसर्ड. ठीक है, ओके. तो let us talk about, there were 10 questions, each of the 15 marks were given, each of them were 15 marks, and
First question was from geomorphology, and again it is a very famous quote of Thornbury. Present day landforms bear more complexity than simplicity. Elucidate. So those of you who have been my students, you know very well how to answer this question. Present day landforms bear more complexity than simplicity. So there are two things here, two terms which are there. One is simplicity and complexity. As soon as I see these two terms in geomorphology, where there is an argument happening against simplicity and towards complexity, or in fact, not only in this, you can understand whenever you see a statement based question, the first thing that your mind should work upon is finding of the context. What is the context in which that statement would have been given? So if I am seeing this statement where there are two words mentioned, simplicity, complexity, can I say कि ये सीधे सीधे डेविस का criticism है? Yes or no? Isn't it a kind of criticism of Davis? What was the basic idea of Davis? He treated landforms as simple. ठीक है? Can I say जैसे ही मैंने ये चीज फाइंड की, आइडेंटिफाई की, हैव आई गॉट माई इंट्रोडक्शन? Yes or no? So I could have written an introduction. I could have said that the Davisian idea of simplicity of landforms does not holds true in reality. True in reality. And when you are writing your answers, try to make your statements smaller. ठीक है, अभी मैं जैसे ही लिख रहा था तो मेरे अंदर एक टेंडेंसी आई कि मैं आई कंटिन्यू विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज देर इज वन मोर सेंटेंस विच आई वॉज गोइंग टू राइट, और दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया होता. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, देयर इज अ रीडर एंड माई इफ यू टॉक अबाउट इट इज माई ड्यूटी टू नॉट टॉर्चर माई रीडर. उसको टॉर्चर नहीं करना है बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखकर. तो राइट स्मॉल सेंटेंसेस, दे आर सिंपल. So Davisian idea of simplicity of landforms does not hold true in reality. In fact, Davis himself has conceded that landforms are function of structure, process and time. Interplay of these factors brings complexity in landform development. Brings complexity in landform development. ठीक है. So what I have done, I have written a very appropriate introduction for what was being asked. मैंने context को find किया, relate किया, what I know about simplicity, complexity, and that is what I have done. ठीक है. Then main body. If you talk about the main body, there should be at least two parts of the main body.
one part of the main body, you little bit elaborate this part. How structure, role of structure will bring complexity, how process and how time can bring complexity in the landforms. So here I'll talk about how structure, process or time will bring complexity. ठीक है? So can we say, if I first talk about structure, so can we say various elements of structure like lithology, aspect and characteristics can bring कॉम्प्लेक्सिटी. इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है, कैन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन. ठीक है, इन जनरल टेल मी, कैन वी से लाइमस्टोन इज अ impermeable rock, but what happens if there is the characteristics, if we introduce like presence of several fractures, what they will do? Will they make it impermeable? And essentially thus what will be happening? The behavior will change and essentially there will be what? Can we say there will be karst topography which will be created? So if there is presence of a thickly bedded limestone with presence of numerous fractures, it will become permeable. There will be secondary permeability which will be introduced. So एक एग्जाम्पल लेना है, ज्यादा नहीं. ठीक है. Similarly, can we take the example of process? We can take the example of process. क्लास में मैंने तुम लोगों को कई चीजें बताई हैं इन द क्लासेस. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेल्टा का एग्जाम्पल लिया है इन द क्लासेस, हाउ डेल्टा इज ट्रीटेड एज एलुवियल लैंडफॉर्म, बट actually it is interplay between three type of processes: waves, tides and the river processes. एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है. टाइम के बारे में जब लिखना है तो टाइम कैसे लिख सकते हैं? टाइम के बारे में कैन वी से, हमने क्लास में बात किया स्केल, हाउ द लैंडफॉर्म्स डेवलप ओवर वेरियस टेम्पोरल स्केल्स and which brings complexity. For example, if we are taking a smaller scale like graded time, what was the kind of landform development? Was it found to be in dynamic equilibrium as was talked about by Hack? But when we are treating it with respect to cyclic time, did we found that there was the decay equilibrium of Davis? So then this first part, because it was a 15 marker, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें कंटेंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया. अदरवाइज हमने इसको एज अ 10 मार्कर क्लास में किया है. सो इन दैट वी नो दैट द क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास कॉम्प्लेक्सिटी, द लैंडफॉर्म्स, मेनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड. ठीक है. सो वन कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म्स, इफ यू रिमेंबर, जो हमने क्लास में बात किया है. सो वंस यू हैव रिटन दिस फर्स्ट पार्ट, देन यू कम टू दैट सेकेंड पार्ट and you start talking about many type of landforms on the basis of complexity can be identified. So first category of landform is simple landforms. So what are simple landforms? Simple landforms are those which are produced by single process.
So they are outcome of a single process. And example of this type of landform क्या हो सकता है? It can be a newly formed volcanic cone or a sand dune, recently formed sand dune. So simple landform. Then compound landforms. So compound landforms कौन से होते हैं? Which are in real world, majority of landforms are compound landforms, which are product of interplay of more than one process. More than one process. So that is the compound landforms. And if you talk about the compound landforms, number of examples, अभी हमने एक डेल्टा का एग्जाम्पल लिया था, बट और भी दे सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैन वी गिव एग्जाम्पल ऑफ एलुवियल फैंस? In alluvial fans, number of processes are involved. Can we say there is involvement of mass wasting? There is involvement of river deposition. There is involvement of vegetation stabilization. There is also involvement of aeolian processes. ठीक है, क्लास में मैंने एक कंसेप्ट करवाया था तुम लोगों को, fault line scarps. In fault line scarps, what we had seen that the faulted landforms, they are not just result of tectonic processes. Can we say simultaneously when the tectonic is at work, there is also the exogenetic forces are also at work? ठीक है, so I can talk about fault line scarps being compound landforms. So compound landforms. Then one category, monocyclic landforms. So monocyclic landforms कौन से होते हैं? On which only one cycle of erosion has operated or is in the process of operation. Is in the process of operation. So you know very well which will be this type of monocyclic landforms. एक example हो सकता है like a newly emerged volcanic cone above the sea level. Similarly, if you talk about in reality what is there, there is polycyclic landforms. Polycyclic landforms. And in polycyclic landforms, more than one cycle of erosion has operated. Can we say majority of landforms are polycyclic? Obviously, yes, because the factors, the stable factors which were assumed by Davis in his cycle of erosion does not exist. Stable, whether it is about the stability of the base level, whether it is about the changing climates, all of these things, the stable climate, they don't exist. Climates do change in very short period of time. Take the example of Pleistocene. Okay. So for example, Davis has given example of uplifted peneplains like Chota Nagpur Plateau. Can we say at least we know that 4 cycle of erosions have taken place over Chota Nagpur Plateau? At least 4 rejuvenation episodes are known to happen. Okay, so I can talk about the polycyclic landforms, and finally I can talk about the exhumed landforms. So exhumed landforms mein we have talked about कि exhumed landforms are which type of landforms? Which were formed in earlier cycle of erosion, then buried, and then have been again exposed. So they further present complexity in the identification of landforms. ठीक है, so ये मेरा main content, main body, and all of these should be written.
अब कंक्लूजन पे आए तो मैंने तुम लोगों को आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग फिजिकल ज्योग्राफी आंसर्स टुडे इट इज very clear that since 1970 one dominant theme in physical geography is applied theme. ठीक है, so if our conclusions can be on the line of applied theme where we are trying to bring a synthesis between human and physical geography, that can be a very marks fetching way of writing conclusions. ठीक है, so if I am talking about this complexity, can we say कि thus understanding of the complexity of this complexity is very crucial to using geomorphological knowledge for solving problems of society, or simply I can write for developing applied geomorphology. ठीक है, तो एक छोटा सा कंक्लूजन बट वेरी रेलेवेंट. Simplicity is very useful for what? Can we say simplicity is very useful for development of science, for generalizations in geomorphology. But in real world, what happens? Those generalizations don't exist. Though that simplicity doesn't exist. This is one of the reasons why majority of the models which have been developed in geomorphology, they do not have relevance from the practical point of view. Okay, because they are based upon this simplicity. So when we are developing applied geomorphology, it is very clear that this complexity has to be taken into account. ठीक है, कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि you will be getting around 60% marks in this what you have written? कोई है? अच्छा वो भी छोड़ो, कोई ऐसा है जिसने एटलीस्ट ये पांचों एलिमेंट लिखे हैं? ये सीधा क्वेश्चन है यार. दिस इज वन ऑफ द 10 लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स विच हैव बीन गिवन बाय थॉर्नबरी. और क्लासेस में मैं पूरा एक 500 प्लस में पूरा एक क्लास इस पे वेस्ट करता हूं. और यही एग्जाम में होगा. This is what will happen in the examination. You will keep postponing the memorization process. You will keep postponing the memorization process. Ultimately, it will come in the exam. क्योंकि क्लास में किया था तो कुछ लिख करके आ जाओ. और कॉपी भर जाती है तो हम लोगों की जो कॉलेजेस की का जो आइडिया है स्कूल और कॉलेजेस का, वो फंडा ये था कि कॉपी भर गई तो पेपर अच्छा हुआ. एंड देन व्हाट विल डू, विल इन्फ्लेट आवर स्कोर्स. And when the result will come, we'll be getting disappointed. As an examiner, मुझे keywords चाहिए थे इस आंसर में. If I was checking this, suppose this copy, I would want the keywords. I would essentially want the keywords. जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो पूरा पढ़ता भी नहीं. When I was starting the classes, it took me around 1.5 hours to check one copy. At that time, my knowledge was not so much solid. But as I became teacher for long period of time, now my knowledge got very concretized. I became very confident. Now I check copies in hardly 30 minutes मैक्सिमम होगी. क्योंकि मैं देख के ही बता सकता हूं कि सही चीज लिखी है या नहीं लिखी है. जस्ट अ स्कैन विल गिव मी एन आइडिया. ठीक है, सो
writing these keywords, highlighting these keywords is very very important for getting marks. You can understand कि वहां पर कॉपीज को, तुम्हारी कॉपीज को 20 मिनट से ज्यादा नहीं दिया जाता. The total number of copies which are there, they are not giving more than 20 minutes. And thus बहुत ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होने वाला. You have to make sure that you are writing the most important keywords and they are also very visible in your copy. उसके अलावा कुछ भी लिख लो, कितने भी पन्ने भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. किसी को लगता है कि इसमें कुछ अच्छा लिखा है? नियर भी है. दिखाना मुझे अपनी कॉपी दिखा. ठीक है. he has written about number of things like एक डायमेंशन भी ऐड किया है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिज्म ऑफ एक्चुअली uniformitarianism, which makes the landforms complex, good for that. And he has mentioned about monocyclic, polycyclic. ठीक है. You have written few things, no doubt. लेकिन if you have written, it will be a feeling. अगर यूपीएससी के आंसर्स तो मिलते नहीं है, यूपीएससी तो देता नहीं है. तो वंस आई फिल द कॉपी आई विल हैव अ फीलिंग कि मेरा पेपर अच्छा हो गया. अभी डिस्कशन से पहले तो लग ही रहा होगा तुम्हें. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. जबकि ये सीधा क्वेश्चन था. एंड पेपर 1 में यू कैन अंडरस्टैंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट. ईदर यू नो और यू डू नॉट. ओके. लेट अस मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, इलस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स. कैसे लिखेंगे इसे? एनीवन हु फील्स कि अच्छा आंसर लिखा है अपनी कॉपी दिखा सकता है. एंड इट इज अ जेनरिक क्वेश्चन. कैन आई से कि अगर ये जीएस में भी आएगा तो स्टूडेंट विल बी इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग. येस और नो? किसी ने लिखा है? शो मी. ठीक है. सो हियर ही हैज टॉक्ड अबाउट लाइक given evidences like glacial lake outburst, rising sea level, heat waves in the Himalayan region. Then some cultural elements में भी changes हो रहे हैं. इसमें मैं तुम्हें 15 में से 5 नंबर. So you have your introduction is good.
बिकॉज यू हैव स्टार्टेड विद द आईपीसीसी रिपोर्ट, बट उसके बाद ड्रिफ्ट हो गया। अब जैसे तुमने यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स डाल दिया, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट यार। फिर तुमने उसमें बायोस्फीयर डाल दिया है। चार नंबर। You have written very appropriate answer. The only thing I find here is you have written less dimensions. तुम्हारा आंसर का जो अप्रोच है दिस गुड। अगर इसमें डायमेंशंस होते तो यू हैव, इफ वुड हैव रिटन मोर डायमेंशंस विल गेट मोर। इसमें मैं फिर भी आई गिव यू 9 मार्क्स, ठीक है। सॉरी 9 बोल रहा हूँ, इट इज़ 15 मार्क्स का है ना ये, तो इसमें मैं तुम्हें लगभग 7.5। अभी मैं डिस्कस करूँगा ना, आई विल डिस्कस इट। Very good. Like here he has written minimum of, if you talk about 6 dimensions लिखे हैं, and not over elaborated the dimensions. Also has given examples with each of the dimensions. At place he has given case study also. The only thing is कि जो तुमने रेमेडीज लिखा है, इस रेमेडीज को बहुत बड़ा कर दिया। क्वेश्चन वॉज नॉट आस्किंग अबाउट रेमेडी। इफ यू लुक इनटू क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ऑलमोस्ट तुम्हारा रेमेडी कितना हो जा रहा है, मोर देन हाफ अ पेज से ज़्यादा का हो जा रहा है रेमेडी। तो रेमेडी अगर लिखना भी तो एक छोटा सा कंक्लूजन में सम कीवर्ड्स रिलेटेड विद द रेमेडीज यू राइट, ओके। बट डिस्पाइट दैट दिस आंसर इज वेरी वेरी गुड, एंड आई विल गिव यू लाइक, अगर मैं चेक कर रहा होता तो मैं तुम्हें इसमें 8.5 नंबर तक दे देता। वेरी गुड। Okay, this is also a very good answer, and you have written variety of dimensions. She has written about the Arctic warming, she has written about the heat dome, she has written about the forest fires, she has written about the AMOC, Atlantic Meridional over turning circulations, biodiversity loss, floods, droughts. Then she has separately written about India, some evidences about India. So it is very good, and if you write it like this, you'll get 9 marks. This is also a very good answer where variety of dimensions have been covered, although dimensions थोड़े से कम हो गए, but since you have tried to give diagrams and case studies उसके साथ examples दिए हैं, तो it would compensate for that, ठीक है। क्योंकि हमें एक
चॉइस लेनी होती है कि या तो हम ज़्यादा डायमेंशंस लिखें या तो जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उसमें हम अच्छे से उसको एलाबोरेट करें एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के साथ. So since you have done at least the second part, you'll also get very good marks. इसमें 8 से 9 नंबर के बीच में. देखो, here what you have done, climate change is a reality, illustrate with suitable examples. तुम्हारा यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है. 1.5 पन्ने तुमने फालतू लिखे जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, पूछा ही नहीं गया. पाँच से 6 मार्क्स. ओके, तो देखो, व्हेन वी गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेनरिक क्वेश्चन है, वेयर इफ यू लुक इनटू द बुक्स, जैसे हमें पता है कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन थ्योरी, जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो उसमें हमारे पास बुक में एक फिक्स आंसर दिया हुआ है. वी नो व्हाट आर एग्जैक्ट डायमेंशंस विच आर देयर. ठीक है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा. तो वी हैव टू क्रिएट द रिलेवेंट डायमेंशंस फॉर दैट. अब अगर मैं एग्जाम में अगर इसको लिख रहा होता तो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी. ठीक है, आई विल टेक दिस वर्ड क्लाइमेट एंड आई विल थिंक कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, what are the dimensions of climate? What are essentially the dimensions of climate? So can I say several dimensions I can identify of climates? Like for example, can I talk about one dimension of climate being temperature? Yes or no? Temperature is one of the dimensions of the climate. Similarly, can I think of other dimensions of the climate? Like, can I think about other things like humidity? Can I think about other things like precipitation? Can I think about other things like, for example, extreme events? ठीक है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, देयर इज अ क्लाइमेटिक सिस्टम. जब मैं जैसे अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो वे आई ऑलवेज ट्रीट क्लाइमेट इज एसेंशियली व्हाट इट इज, क्लाइमेटिक सिस्टम. और जब हम क्लाइमेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो कैन आई से, is hydrosphere also part of the climate? Is it also related with the biosphere? These are all part and parcel of the climatic system. Is the cryosphere also part and parcel of the climatic system? ठीक है, so if I am writing my answer along all these dimensions, then I will be in a position to essentially prove that climate change is essentially a reality. ठीक है, so I can start, अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिखना है तो I can start, best way is you start with the IPCC. And like for example, what the IPCC is saying, that how much is the concentration of carbon dioxide has become? It is around 412 ppm के पास हो गया.
by 2023? So I can start with some specific detail, and the most authoritative detail, if you talk about it, is the IPCC. So that will be the best way to start with the introduction, and then we'll talk about the temperatures, the rising temperatures. So tell me, can we say it is very clear that we are nearing to the figures of 1.5 degrees Celsius? And is it clear with respect to, can I talk about the recent heat waves? ये न्यूज में था, क्या इसका मैप भी बना सकते थे? ठीक है, एक ही कॉपी में मैंने देखा मैप बना हुआ. ठीक है, ज्योग्राफी में इफ यू आर नॉट राइट ड्रॉइंग डायग्राम्स, मैप्स, यू विल बी ऑन द लोअर साइड ऑफ रिसीविंग द मार्क्स कम हो जाएंगे. So wherever you find the opportunity, you draw, you essentially do it. ठीक है. Similarly, if you talk about humidity, what we are finding? We find that if you look into the period between 1980 to 2010 का जो पीरियड है, it is found that during this period the humidity levels have risen, they have increased. Humidity has essentially increased. अब इसका evidence देना है मुझे. Can I say it is very clear from the fact that today what is taking place, the precipitation has become more intense. Greater अगर humidity है atmosphere में, तो उसका सीधा एक आउटकम क्या होगा? प्रेसिपिटेशन विल बिकम मोर इंटेंस. क्लास में मैंने करवाया मॉनसून, फॉर एग्जांपल, हाउ द नंबर ऑफ डेज इन द मॉनसून्स हैव डिक्लाइंड. ये क्लास में करवाया हुआ कोई क्वेश्चन है, आई वुड हैव यूज्ड दैट. ठीक है. सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, so what we are finding? We find that in number of areas of the world, precipitation, overall precipitation has increased. And if you talk about, like for example, have we seen in Europe, particularly Western Europe, North America, Canada, all of these areas we find that there has been increase in precipitation which is taking place. In fact, simultaneously what is happening? There is, if you talk about snowfall, it has decreased. There is decline in the snowfall. Now more precipitation is falling as rain rather than snowfall, which is clearly evidence that there is global warming taking place or climate change is definitely occurring. Extreme events, so many of them are there. ठीक है. एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू कैन टॉक अबाउट एल नीनो साइकिल. क्लास में बताया मैंने इसके बारे में. एल नीनो साइकिल, व्हाट वाज द केस ऑफ एल नीनो साइकिल? वी नो दैट बिफोर 1980 द एल नीनो साइकिल टुक 5 to 7 years was the time period of El Nino cycle. But 1980 is considered as a watershed decade where the warming has intensified, and as a result of which what we find, this cycle has reduced to 3 to 5 years. And recent indications by IPCC, what they are suggesting that this is bound to shorten further. And we know, tell me, can we say, do we know that El Nino events are associated with several extreme events across the world? ठीक है. इसका एक मैप भी है, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन चेंजेस होते हैं.
वो मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। Similarly, changes in the hydrosphere, and here if you want you can talk about the sea level rise which is occurring. Biosphere में you can talk about the increasing forest fires, like अभी recent में कनाडा में देखा होगा, you must have read about Canada, ठीक है। सो जो मोस्ट रिसेंट है उसको लिखो। क्रायोस्फीयर, अगेन यू कैन टॉक अबाउट द मेल्टिंग, एंटार्क्टिक मेल्टिंग। अभी रिसेंट में न्यूज आया है इनफैक्ट कि द मेल्टिंग इन द एंटार्क्टिक इज सो मच फास्टर टेकिंग प्लेस essentially that it is threatening to affect the deep sea circulations, which will bring a global catastrophe. ठीक है। सो जहां पर देर इज लैक ऑफ सच ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, you can bring that on, ठीक है। बट वही बात है कि you have to think properly, you have to solve those questions, practice करना। Question number 3, plants and animals that exist in particular ecosystem are those that have been successful in adjusting to their habitat and environmental conditions. Elucidate with examples. So plants and animals that exist in particular ecosystem are those that have been successful in adjusting to their habitat and environmental conditions. कोई बता सकता है कि क्या लिखना था इसमें? Yes, 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 रंजन, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स हो सकता है। You can talk about other type of extreme events like the cloud bursts etc. taking place so much frequently. Okay, कैसे लिखना था इसको? कोई और है? और एक लिखा था कि जो पोलर बियर होता है और ऑस्ट्रेलियन बियर होता है उसमें बॉडी शेप चेंज होता है और एक एशियाटिक लॉयन और आई विल कम टू दैट, अभी आता हूँ। और कोई है जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस क्वेश्चन में? यस, ही कुड हैव रिटन अबाउट दैट। अब देखो, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लाइक व्हाट ही इज सेइंग, मेनी ऑफ द कंसेप्ट्स ही इज टॉकिंग अबाउट, he is talking about more from the perspective of regional biogeography, ठीक है। this is what you are talking about, particular regions specific। यहां पर अगर मैं देखूं, plants and animals that exist in a particular ecosystem it is more of what? Systematic, are those that have been successful in adjusting to their habitat and environmental conditions. Elucidate with examples. Has it anywhere asked variety or spatial variability? ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा एक माइंडसेट फिक्स था, मैंने कुछ पढ़ लिया है अलग से बायोज्योग्राफी में, मुझे लगता है कि उसी से प्रूव करूं तो मजा आएगा। तो वो जो फिक्स माइंडसेट है वो लेकर के नहीं जाना एग्जाम में। उससे क्या होता है, कई बार जो बहुत बेसिक चीजें हैं, मोस्ट बेसिक थिंग्स वी फॉरगेट।
when we get into awe of something. ठीक है, मुझे पता है कि बायोजोग्राफी में, रीजनल बायोजोग्राफी मैं ही पढ़ाता हूं, बाकी जगह पे केवल सिस्टमैटिक बायोजोग्राफी पढ़ाता हूं. बट यू डोंट हैव टू कम इन ऑ ऑफ दैट थिंग कि अरे ये तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है. मैं अब इसको दोबारा से पढ़ो और टेल मी, अगर मैंने बायोम्स का फ्रेमवर्क ले लिया होता तो क्या मुझे एनफ एग्जांपल्स मिल जाते? Could I have talked about how in tropical rainforest adjustment is taking place of the species? प्लांट्स का भी एग्जाम्पल है, एनिमल्स का भी एग्जाम्पल है. पूरे बायोम पढ़ते हो यार. कुड यू टॉक अबाउट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्लांट का एग्जाम्पल देना होता, कुड आई हैव टॉक्ड अबाउट एपीफाइट्स? कुड आई हैव टॉक्ड अबाउट द 3 layers ऑफ ट्रीज विच आर देयर? लाइक फॉर एग्जाम्पल जो अपर लेयर होता है उसमें व्हाट वी फाइंड, डू वी फाइंड दैट दे हैव स्मॉल लीव्स? व्हाई? बिकॉज एट दैट हाइट देयर इज एसेंशियली मोर विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स मिलती हैं. तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, एंड टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग द साइज ऑफ देयर लीव्स स्मॉलर. Color of the leaves is light green. The third layer of the trees which is found, in that the leaves are larger, bigger surface area, because less sunlight is reaching. ठीक है. सिमिलरली कैन आई टॉक अबाउट, कितने सारे बायोम्स हैं यार, पूरा आंसर हो गया. एंड अगेन ये क्यों हुआ? वाई डिड इट हैपन? वाई यू वर अनएबल टू रिलेट? You were essentially unable to relate because of lack of revision. मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में टॉपिक्स की स्कैनिंग चलने लगती है. कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंटेंट विच हैज टू बी रिटन. The diagnosis which we have done with some of you, you might have seen, उसमें हमने एक specific column रखा हुआ है, एक point रखा हुआ है. Is the syllabus, have you memorized the syllabus? Is the syllabus, have you learned the syllabus by heart? There is a purpose for that. केवल syllabus ही याद हो ना तो बहुत सारे question वैसे solve हो जाते. So again, plants and animals that exist in a particular ecosystem are those that have been successful in adjusting to their habitat and environmental condition. Elucidate with examples. ठीक है. So इसमें 2 parts होंगे हमारे आंसर के. In the main body, what I'll do, first part is the general part. I'll write some general explanations I will give. ठीक है. और general explanation में आई शुड नॉट गिव, सपोज ये 150 वर्ड था, यानी कि मेरे पास 200 वर्ड थे, उसमें 40-50 वर्ड्स मेरे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में चले गए. इसका मतलब मेरे पास 150 वर्ड्स हैं टोटल लिखने के लिए. ठीक है. सो आउट ऑफ दैट 150 वर्ड्स 30 to 40 वर्ड्स आई विल स्पेंड हियर जनरल. ठीक है. सो can I talk about here the general thing? Can we say about the environmental factors? Environmental factors, if I want, I can talk about the laws of shell food. Shell food. So shell food क्या कहता है? Species require environmental resources for their survival. They require
environmental resources for their survival, but due to competition from other species and disturbance events, they may not be always found in their niche, due to which what has happened, historically they have adapted. ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. देन सेकेंड पार्ट में व्हाट I'll say this adaptation is very clearly visible in the different biomes of the world. आई होप इट इज क्लियर. अब इसके आगे मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, ज्यादा वर्ड्स नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. लाइक आई कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वन एग्जाम्पल ऑफ सवाना का जरूर एग्जाम्पल लेना, वहां पर अडैप्टेशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. इफ यू टॉक अबाउट डेजर्ट, you can take very very good example. Mediterranean, very good example. Temperate से एक दो एग्जाम्पल ले लो. Like for example, if you take the case of temperate, like taiga biome. So what we find, taiga biome, trees are found to be evergreen. So why they are evergreen? They are evergreen because in taiga region the sunlight which is received is very short. It is between 50 to 70 days. So the growing season is very short. And since the growing season is very short, the plants, they do not want to shed their leaves. Because if they shed their leaves, what will happen? Can we say a part of these 70 days will go in regrowing the leaves, which will lead to wastage of time and thus inefficiency. ठीक है, so you can talk about that. लेकिन याद ये रखना है कि दोनों का एग्जाम्पल देना है, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली पूछा है प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वट एवर बायोम यू आर टेकिंग, यू गिव एग्जाम्पल ऑफ बोथ. लाइक टैगा में ही अगर हम देखें, so what we are finding in taiga, can we say number of examples are there? Like for example here, because there is scarcity of food for large period of the year, we find several type of adaptation mechanisms. Many of the animals are migrating towards south in the winters. Other type of adaptation mechanisms, what happens? Size of the animals increases, they are storing fat in their bodies. Some of these are going for hibernation. ठीक है, सम ऑफ देम हैव बिकम व्हाट, दे हैव बिकम सक्लर्स. सक्लर्स क्या होते हैं? दे आर सकिंग जूस फ्रॉम द ट्रीज. आई होप इट इज क्लियर. तो बहुत सिंपल था यार ये क्वेश्चन, मतलब इट वॉज ऑल अबाउट जस्ट इंटरप्रिटेशन. ओके, moving on, question number 4. Culture is a dynamic concept. Illustrate with examples. कैसे लिखना था इसको? Again, it was a very vague type of question, क्योंकि जनरली बुक्स में कल्चर से रिलेटेड, जहाँ पर जो थोड़ा सा when we go into the social sciences के डोमेन में, ज्योग्राफी में सबसे अच्छी बात यही है
कि we have frameworks for majority of the things. But as soon as we go in certain kind of domains of humanities and social sciences, वहाँ पर frameworks थोड़े missing हो जाते हैं. So this becomes a issue. फिर भी क्या लिख सकते थे इसमें, कैसे लिख सकते थे? Very good. ठीक है, दिस इज द वे यू हैड टू राइट. ज्योग्राफी में आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ terms like patterns, dynamism, etc., all of these are showing what variabilities. And in geography we study geography in two frameworks, दो different frameworks में geography को पढ़ते हैं. And if you talk about, when I'm showing the dynamism of culture, I can show how culture has been dynamic in time and how it is dynamic in space as well. ठीक है, और फ्रेमवर्क मिल गया, लिख सकते हैं. तो आई कैन स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन. So first important thing is basically what is culture. Can we say we can start with the definition of culture? ठीक है. So if you talk about culture, culture is sum total of lifestyle. It is essentially sum total of lifestyle. तो देखो कल्चर जो होता है, culture is a variable phenomenon. It is highly variable phenomenon. Accumulation of cultures, जब accumulation of cultures हो जाता है, then what happens? We call it as a civilization. So there what happens? There becomes a little bit of uniformity. But within a civilization there will be variety of cultures which will be present. ठीक है. So culture is sum total of living styles or lifestyles which is outcome of interplay between the physical world and physical and human world. अगर मैं इस पॉइंट को और थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. रिमेंबर क्लास में भी आई हैव टॉक्ड अबाउट Vidal de Lablache. Has he talked about genere dy? And he is very clear that it is difficult to understand which came first. Whether genere dy is outcome of the pays or pays are the outcome of genere dy. He is very clear that this interaction between the pays and genere dy is what? It is dynamic. Dynamic, both in space and time. ठीक है. सो आई कैन स्टार्ट विथ विडाल. एक फ्रेमवर्क के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. अदर नेम भी हम ले सकते हैं, लाइक वन पर्सन हु हैज वर्कड हियर इज कार्ल सॉयर ऑन दिस कंसेप्शन बेसिकली. लेकिन जब टाइम वाला लिखोगे तो वहां पर सॉयर के बारे में बात करो, दैट इज बेटर. सो दस वी कैन से अल्टीमेटली देयर इज dynamism of culture can be seen through the framework of time
and space through the framework of time and space. So tell me, जब मैं time की बात करूंगा, how the culture has evolved, कैसे लिख सकते हैं? Can I take the framework of Whittlesey? Yes or no? Could I have taken how, if you talk about human beings were essentially hunter and gatherers, from hunter and gatherers, we essentially, our culture evolved into what? It evolved into shifting cultivation. From shifting cultivation, it further evolved into sedentary, a settled form of early primitive settled form of agriculture. Ultimately, it evolved into subsistence intensive. Agriculture or farming, and this has further evolved into commercial agriculture, and this commercial agriculture has further, if you talk about, evolved into industrialization. So इन सबके साथ कुछ कुछ जो कल्चरल ट्रेट्स थी, we can mention with each of these what were the type of cultural traits which were there. ठीक है, so I can answer about the how culture is dynamic in time. So half of my answer is will be completed. Then ले सकते हो, मैंने नहीं लिए बिकॉज रोस्टोव वॉज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, मैंने वो फ्रेमवर्क लिया जो विटलसे का फ्रेमवर्क था, जो एसेंशियली इफ यू टॉक अबाउट कार्ल सॉयर का फ्रेमवर्क था. ठीक है, दीज वर द पीपल हु वर एक्चुअली कल्चरल ज्योग्राफर. सो ये जो अपनी तरफ से थोड़ा सा कम इंट्रोड्यूस करना है चीज़ों को. एंड वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग, एक्चुअली लुक इन टू वॉट वॉज द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी. मेन वो किससे रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट इन स्पेस, कैन वी से हियर ऑल्सो कल्चर्स बिकम डायनामिक. एज वी नो, कल्चर्स के साथ क्या होता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम देयर हर्ट्स, हर्ट से ओरिजिनेट होते हैं. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज कल्चरल diffusion phenomena is taking place in various ways. ठीक है, and as a result of which what happens, there are changes in the culture which is taking place. So this can be in the form of relocation diffusion से हो सकता है. ठीक है, तो चार तरह के डिफ्यूजन है, एग्जाम्पल्स उठा करके बता दिया हाउ there is dynamism in the cultural elements which are there. ठीक है, like for example, take the case of hierarchical diffusion. Hierarchical diffusion, does it brings changes in the cultural practices? Can we talk about India, British India? What has been the influence of British on our culture? Today, for example, take one element of culture, that is language. Can we say that English has become a very important language of communication in India today? And further, when there is two cultures are mixing or they are combining, what will be produced? Can we say new cultural elements can be produced? Yes or no? And tell me, is English an example of this cultural evolution?
ठीक है. So I can take an example of hierarchical diffusion, how it is bringing. Similarly, if you talk about, I can take example of माइग्रेशन डिफ्यूजन. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं माइग्रेशन डिफ्यूजन के. कैन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट माइग्रेशन डिफ्यूजन विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज. और इसमें भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने हायरार्किकल डिफ्यूजन में ही बात किया था, तो उसमें भी माइग्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. तो व्हाट वाज हैपनिंग, लाइक एक कल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं विच went from developing to developed countries. ठीक है. So if you talk about from developing to developed countries. So tell me, can we say when there was the phenomena of colonization, during the colonization we found that the Europeans or the Westerners found one culture of tattoo. ये जो टैटू का कल्चर है, it was already present in the developing countries. So they have adopted this culture of tattooing from where? From the developing world. It was not there in the developed world. ठीक है. So I can give example. Same thing. I can talk about the reverse from in the developed countries. In developed countries, so developed countries में क्या हो रहा है? Can we say, can you take the example of US, melting pot of cultures? So what has happened? Variety of cultures have migrated there. Do we find it is visible in variety of landscapes? Is it visible in the religious landscape? Is it visible if you talk about in the linguistic landscape? And it is changing. Like for example, take the case of cuisines. If you talk about, have the cuisines, particularly like Chinese, have they acquired global texture? Have they become global cuisines? अलग से लिख सकता हूं रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ब्रिंगिंग दिस डायनामिज्म टू द कल्चर. तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है? कैन वी से कि ग्लोबलाइजेशन ने, अगर वर्ड ये था तो it has reduced the size of the earth, as a result of which now what is taking place? Information diffusion, spread of information, cultures, it is taking place at very fast rate. The emergence of ITC has further accelerated this process. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस कि सारी चीजें कहां पर हैं. इस तरह के जब वेग क्वेश्चंस होते हैं उसमें सारी चीजें किस पे आती हैं? फ्रेमवर्क्स पर आती हैं, विच विल गिव दैट काइंड ऑफ एज टू योर आंसर्स. और वो फ्रेमवर्क्स हमने पढ़ रखे हैं. जस्ट द थिंग इज कि प्रोबेबली हमने उसको एनफ रिवाइज एंड प्रैक्टिस नहीं किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर अनएबल टू रिकॉल and use it. This was a specific question. Startups may play important role in giving fillip to economic growth in India. Examine. ठीक है. तो अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है बिकॉज कई कई जगह पर तो फट्टे चलते हैं, कई कई जगह पर हमें लगता है कि इसमें फट्टे चल जाएंगे, but there is need for a content. There may be a theory beneath that particular question which has been asked. ठीक है. So no matter how much good answer we have written,
अगर हमने वो जो पूछा गया, जो उसके अंदर छुपा हुआ था, वो चीज नहीं बताई है, then we'll not get. It is as simple as that. So startups may play important role in giving fillip to economic growth in India. Examine. Can understand हमने 500 plus classes में we have talked about the knowledge theory of development. ठीक है? So essentially I'll just talk about the theory so you can understand how to frame the answer. So theory of knowledge on development, on economic development. So what is this theory of knowledge? It says that ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो पुरानी जो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट थी उसको इट क्रिटिसाइजेस देम. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक वन ऑफ द थ्योरीज जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इट वाज ग्रोथ पुल थ्योरी. ठीक है? सो ग्रोथ पुल थ्योरी क्या कहता है? इट सेज दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोपल्सिव फर्म्स. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज प्रोपल्सिव फर्म्स? These propulsive firms are involved in research and development. ठीक है? ये R&D में they are involved. And through this R&D, what they are doing? They are leading to innovation of new technologies. Innovation of new technologies. So innovation of new technologies, that means it is taken for granted. If there is a large firm and it is investing in knowledge, what will happen? It is taken for granted that there will be innovation of new technologies, and this new technologies will lead to what? It would lead to propulsive growth, and all those processes of polarization, agglomeration, etc. will be taking place, due to which the development will occur. ठीक है? But the knowledge theory of development, it says that this is not correct. ठीक है? So what is the basic idea of the knowledge theory of development? It believes that ये एक चीज पर एग्री करता है, and what is that agreement? That development is related with innovation of new ideas. It agrees with that. But what is the disagreement? It says that these new ideas are not generated by large firms. It says that the new ideas are generated by small entrepreneur firms like the startups. Like the startups. So what it essentially says, the thing is, large firms का role क्या होता है? Large firms have capacity for large investment in creating a knowledge environment. Creating a knowledge environment. ठीक है? Ultimately, what will happen? Some individuals related with this knowledge environment. Okay, so these individuals will be in space. They will be proximate, near to this knowledge environment. So, some individual, and ये individuals कौन से हो सकते हैं? These can be the employees of those firms.
ठीक है, or someone who is like supplier or related person. So some individuals will see certain opportunities or develop new ideas related with the concerned knowledge. Related with the concerned knowledge. So what will be the next step? They will take this idea to that large firm. Okay? But most of the times those large firms would not be willing to invest in this idea. Okay? Why they will not be willing to invest? Because they are already earning high. And they might not realize the potential of this new idea. Also, large firms are managed by basically which type of people? Generalists, who have less ability to understand the technical details. And thus they will not be interested in taking the risk. But because that idea was brainchild of that individual, he will be willing to take that risk. And such individuals become the entrepreneurs and they start those startups. Some of them become successful and in fact you can understand highly successful. In fact, if you look into the history, it has been like this. Take the case of automobile industry. They also started as startups, small startups on the work of individuals. In the present domain, if we look into Zomato, Swiggy, Ola, Uber, all of these are what? They are examples of such startups. Okay? Similarly, if you look into the Indian domain, can we say earlier Infosys was also a startup? It was also a startup firm. So this is the impulses which generate growth. ठीक है? सो कंटेक्स्ट समझ में आ गया कि ये कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में पूछा गया था. स्टार्टअप्स में प्ले इंपॉर्टेंट रोल in giving fillip to economic growth in India. ठीक है, examine. So first part I'll write about the conceptual aspect of this. Then from India I'll give some examples. And then last part में एक प्रॉब्लम का भी एस्पेक्ट लिख दो, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जो उस ग्रोथ को कंस्ट्रेन कर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. How has inappropriate urban land use policy accounted for undesirable development in and around the metropolitan cities? ठीक है, किसी ने लिखा है इसको? कैसे लिखना था? सीपीटी मॉडल था. सीपीटी मॉडल में कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एक जगह होती है. रूरल जो क्लास था, जो पुअर क्लास था, उसको ये मतलब इसमें आते हैं. मतलब जो ग्रोथ पोल जो मॉडल था, देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब इसमें सीपीटी ग्रोथ पोल, आई डोंट थिंक इट हैज टू बी रिटन. क्वेश्चन बहुत क्लियरली पूछ रहा है अर्बन लैंड यूज पॉलिसी. So if I have to think of something which it will be related with, can we say one model which we have studied about the urban land use policy, it is the morphology of cities. Morphology of cities model क्या बताता है? Concentric zone theory, sectoral model, all of these are telling me what? They are telling me about the urban land use. They are urban land use models.
समझ में आ गई बात? सो हियर द इनएप्रोप्रिएट अर्बन लैंड यूज पॉलिसी accounted for undesirable development in and around the metropolitan cities. ठीक है? So I would simply start with something like I can say that the top heavy urbanization in India, because this was taken from paper 2, this question, in India is reflected in the suburbanization occurring around the metropolitan cities of India. ठीक है? Then I'll talk about the main body. अब मेन बॉडी के कितने पार्ट होंगे, दैट इज वी हैव टू डिसाइड. सो इट इज सेइंग इनएप्रोप्रिएट लैंड यूज पॉलिसी. तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा? विच आर दोज इनएप्रोप्रिएट अर्बन लैंड यूज पॉलिसी. ठीक है? अब इसमें हमेशा अर्बन जो वर्ड है, क्लास में मैंने सिखाया तुम लोगों को, ऑलवेज थिंक अबाउट अर्बन एज सिटी एज एरिया एंड सिटी इन एरिया. तो जो अर्बन लैंड यूज पॉलिसी के दो डायमेंशंस होंगे, सिटी इन एरिया, सिटी एज एरिया. तो सबसे पहले अगर मैं सिटी एज एरिया के बारे में लिखूंगा तो एज एरिया. अब इसमें कैन आई से द इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज पॉलिसीज क्या है? मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज, कैन वी से दे हैव हिस्टोरिकल ओरिजिन. ठीक है? दे हैव historical origin, and most of these, if you look into, they are based upon what? They are single nuclei cities, or we can say single या double nuclei cities. So they have CBDs, old and new CBDs, many of them. So if you talk about this, इसके प्रॉब्लम्स, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बता दो. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट? कैन वी से इट विल लीड टू कंजेशन टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस कंजेशन टुवर्ड्स द सेंटर which will be taking place, can we say that it will it generate centrifugal forces? It will essentially generate centrifugal forces. Then अगर हम बात करें, most of the city planning laws, ठीक है, the metropolitan laws which are there, they are still governed by the British laws. They are still governed by the British laws, the British India के टाइम पे जो laws बने थे. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी मैंने क्लास में करवाया, फ्लोर एरिया रेशियो. फ्लोर एरिया रेशियो लॉज. So what we find, can we say that in most of the cities of India, the floor area ratio is low? ठीक है? Because you can understand, वो जो ब्रिटिश, जो अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी का एक फिनोमेना है कि वहां पे हॉरिजॉन्टल स्प्रॉल ज्यादा हो रहा है.
rather than if you talk about the vertical sprawl. So that same phenomena has crept into our urban planning. And there it is again controlled by the floor area ratio law. Here also, most cities, what we find of India, it is low floor area ratio. ठीक है, अगर फ्लोर एरिया रेशियो इज लो, डज इट मीन्स दैट वी वोंट बी अलाउड टू ग्रो वर्टिकली? ठीक है, लिमिट है कि हम कितने बिल्डिंग मतलब कितने फ्लोर्स बना सकते हैं. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस लो FAR is reflected in what? It is reflected in the horizontal sprawl dominant over the vertical sprawl of the city. And this is very clearly reflected in the out migration or the phenomena of suburbanization towards the fringes. So again, this is the issue which is there. ठीक है, so that is one inappropriate land use policy which is found. Then if you talk about the other inappropriate land use policy is related with, अब उसी city से थोड़ा related की अगर हम बात करें तो what we are finding that in most of the cases the focus on development of satellite towns is unplanned, or development of satellite towns is unplanned. So in majority of cases, if you talk about, satellite towns grow haphazardly and they lack basic infrastructure because they were unplanned. In many of the cases, they are not connected with mass rapid transportation systems. As a result of which, what happens? We are finding that most people will prefer to shift on the fringes rather than go into such satellite towns. So this is another problem. We can see कि जहां पर metro rails develop हो गई, वहां पर there is mobility movement. People have now begun to settle there, but where they are not, again this is an issue. So that is one of the problem. Then city in an area, और सिटी इन एन एरिया की अगर हम बात करें तो टेल मी, कैन वी से दैट इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज एसेंशियली अ developing country, and since it is a developing country, it has lesser resources, and thus what it has done, it has adopted a uneven or unbalanced, जिसको बोल सकते हैं unbalanced model of development or economic development, which is very clearly reflected in the fact, can we say that it is the class 1 cities which have received attention of majority of the policies, urban regeneration policies? Yes or no? And very good example is the smart city program. And this has done what? This has very clearly, जो हम बार बार क्लास में बोलते हैं, then you can talk about that bypassing of the stepped migration process, which is resulting in what? Which is resulting in overpopulation in the metropolitan cities of India. और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 2011 सेंसस में कितना था? Out of the total urban population,
42% of the population, urban population, was living in just 52 metropolitan towns, metropolitan cities of India. ठीक है, सो ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हम पॉलिसी का प्रॉब्लम लिख रहे हैं. और फिर उसके बाद एक और इसका पार्ट है, अकाउंटेड फॉर अनडिजायरेबल डेवलपमेंट. तो अनडिजायरेबल डेवलपमेंट डज इट मीन्स कि मुझे एटलीस्ट 30% इस पे भी लिखना है कि प्रॉब्लम्स इन द फ्रिंजेस ऑफ द सिटी, व्हाट काइंड ऑफ अनडिजायरेबल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस. ठीक है, सो दैट ऑल्सो यू राइट हियर. किस तरह से वहां ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, हाउसिंग का प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 7, वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग, इलैबोरेट. सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? सी दिस इज द थिंग, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पता होना चाहिए. So vital statistics are the statistics related to birth, death. Okay, so such kind of migration, marriage, etc. So such kind of demographic statistics are considered as the vital statistics. सो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि द कंसेप्ट इज टिपिकल विच नॉट एवरी वन नोज, वी कैन स्टार्ट आवर आंसर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट और डिफाइनिंग व्हाट इज दैट फिनोमेना. ठीक है, सो यहां पर भी वी कैन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. So here define vital statistics. Vital statistics. अब as we talked about vital statistics में कौन कौन सी चीजें आती हैं? Phenomena like birth, death, migration, if you talk about, or other type of data like marriage etc. ठीक है, तो एक तरफ तो ये हो गया हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स, दूसरी तरफ हमारा हो गया डेवलपमेंटल प्लानिंग. ठीक है, तो डेवलपमेंटल प्लानिंग में कई तरीके से थिंक कर सकता हूं. लाइक टेल मी, कैन आई थिंक फ्रॉम स्पेशल पर्सपेक्टिव? डेवलपमेंटल प्लानिंग ऑफ, एक कंसेप्ट है हमारे सिलेबस में बैकवर्ड एरियाज, डेवलपमेंटल प्लानिंग ऑफ रूरल एरियाज, developmental planning of urban areas, developmental planning of, I can go on. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पैराग्राफ्स लिखने, हाउ बैकवर्ड एरिया में इसका क्या बेसिक रोल होगा. लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ अ बैकवर्ड एरिया. इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ बैकवर्ड एरिया लाइक कोई भी बैकवर्ड एरिया ले सकते हैं, लाइक बुंदेलखंड को ही ले लेते हैं. Bundelkhand. So we will be finding in Bundelkhand, it is essentially an area where there is lots of problems.
In general, you will be finding this is an area where the fertility or the birth rates are still high, while mortality, if you talk about, is essentially what? It is again still high. Okay. This explains why here we are finding that there is, compared to the other areas of Uttar Pradesh, like for example, अगर मैं इसको Western Uttar Pradesh से compare करूँ, so we'll be finding that there is high population growth taking place, and there is, because this area is still, that means in the second stage of demographic transition. ठीक है, और इसका एक हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का आउटकम क्या हो रहा है? वन आउटकम इज दैट देयर इज हाई आउट माइग्रेशन. हाई आउट माइग्रेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम हियर. ठीक है, दैट मीन्स if we want to tackle this problem, what we have to do, we have to make sure, एक issue क्या है कि we have to make sure that the mortality declines. There is decline in the mortality rates which should take place. We have to also understand कि यहाँ पर एक बहुत important aspect क्या है कि if we combine with the resource, it is essentially what? Resource scarce region. Resource scarcity. So that means हमें यहाँ पर क्या करना है? Human resource development will be the key in developing this area. तो vital statistics से हमें वहाँ का जो भी characteristics है उसके बारे में पता चलता है. Similarly, अगर मैं tribals की बात करूँ, ट्राइबल रीजन और ट्राइबल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं? वन प्रॉब्लम इज दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बिकम फास्टर. Population growth has become essentially faster. Why? Because the fertility still has not declined. Mortality में धीरे धीरे गिरावट आई है, but again it has not declined. Other related, if you talk about health parameters, you will be finding, like for example, in many of the tribals areas, what we find, there is high IMR, MMR. ठीक है, अब इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग? द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. बिफोर देयर इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम because the population size was small. Now it is becoming a problem. So what you need to do, can we say we have to improve these parameters? And then only what will happen? The fertility will begin to decline. Till you improve these parameters, the fertility will not be declining. And thus, one way, besides जो बाकी हम चीजें करेंगे, economic development, which should be related with the forest based economic development होना चाहिए, तो वो सब तो होगा ही, but this is also one of the aspects which need to be taken. So it is essential part of development planning. ठीक है, ये vital statistics और भी तरीके से, for example, when we are talking about the, in case of tribal sub plan approach, can we say the government gives subsidy? Yes or no? And again, this subsidy for the development plan, should it be based upon the vital statistics? Obviously, yes. Like take the example of Arunachal Pradesh. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेनी ऑफ दीज ट्राइबल एरियाज, वहां पर क्या हुआ? गवर्नमेंट कंटिन्यू टू गिव हाई सब्सिडी. ठीक है, बट इनफैक्ट पर्टिकुलरली नागालैंड में गवर्नमेंट कंटिन्यू टू गिव हाई सब्सिडी, बट इट वाज फाउंड दैट देयर वर लेस पीपल, मोर पीपल हैड माइग्रेटेड.
the data, the vital statistics data was inflated. ठीक है, so that is basically the case of vital statistics. Examples लेके उसको सब समझाओ. Examine the spatial disparities in development and incomes that persist in large countries like India. Easy question था, ठीक है. डेवलपमेंट एंड डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट एंड इनकम्स, और बहुत क्लियरली लिखा हुआ है स्पेशियल डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट एंड इनकम दैट परसिस्ट इन लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया. तो ये एग्जामिनेशन हम कई तरीके से फ्रेमवर्क में कर सकते हैं. एक फ्रेमवर्क हो सकता था कि मैं एक कंट्री ले लूं, बिकॉज इंडिया को मेंशन किया है इसने, तो एक कंट्री लेकर के उसको मेंशन बताऊं डिस्पैरिटीज किस तरह की होती है. एक ये फ्रेमवर्क हो सकता था. वन फ्रेमवर्क कुड हैव बीन स्पेशल डिस्पैरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट अ मोर मैक्रो लेवल डिस्पैरिटी. इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में कैन वी से दैट दिस डिस्पैरिटी इज नॉर्थ साउथ डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली देयर इज ईस्ट वेस्ट डिस्पैरिटी विच एग्जिस्ट. तो ब्रॉड लेवल पे, जोनल लेवल पे हम बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट एट मोर रीजनल level, that is essentially the state level पे बात कर सकते हैं of the disparities. Similarly, I can go at smaller level. Can I go at intrastate level? ठीक है. I can go at even local level. Like for example, can I talk about rural urban डिस्पैरिटी विच एग्जिस्ट. सो ये एक फ्रेमवर्क हो सकता है लिखने का आंसर, ठीक है. और हमने एक्सप्लेन कर दिया. इस फ्रेमवर्क में हमें एक स्पेसिफिक कंट्री लेकर के लिखना पड़ेगा, ठीक है. बट एक दूसरा फ्रेमवर्क हो सकता है. इट इज सेइंग एग्जामिन द स्पेशल डिस्पैरिटीज इन डेवलपमेंट एंड इनकम्स दैट परसिस्ट इन लार्ज कंट्रीज. सो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट, सबसे पहले मैंने शॉर्ट में ये सब डिस्पैरिटीज बता दी, ठीक है. और फिर उसके बाद मैंने जो फैक्टर्स विच आर कॉजिंग डिस्पैरिटी उसको लिखना शुरू किया, ठीक है. जो स्पेशल डायमेंशन विल ऑलवेज कम फर्स्ट. सो देन आई विल टॉक अबाउट द वेरियस फैक्टर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल द रिसोर्स एंडाउमेंट कैन बी वन फैक्टर. When you are talking about this, you can also talk about the, for example, resource curse. Example is Jharkhand, Rayalaseema, Telangana. So we can talk about that. ठीक है. Then we can definitely talk about the stages of growth. Some of the regions of India, they are lying in the higher stages of growth because there was diffusion of development was fast earlier there. They experienced, like Britishers came and they established their centers in only few states of India. ठीक है. So can we say time में उनके पास advantage था, and because of that it happened. फिर स्पेशल इकोनॉमिक मॉडल्स यूज कर सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए ऑफ दिस डिस्पैरिटी. स्पेशल इकोनॉमिक मॉडल में हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ पोल्स. सो हियर यू कैन टॉक अबाउट द ग्रोथ पोल्स विच वर क्रिएटेड. अब इसमें भी ग्रोथ पोल्स में जब बात कर रहे हो तो कई लेवल पे बात करो. फर्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ पोल्स वर क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स. Then after independence, we created next set of growth poles in the form of capitals and state capital. And then more set of growth poles were created in the form of new industrial towns, etc. Like Bokaro is an example of that. ठीक है. So that is I will be essentially talking about. Then एक export base
आइडिया होता है. So those of the states who have good ports, port facilities, like take the example of Gujarat, Maharashtra, they will be more developed. Then political economy, factors which are there, like for example British का time ले लें, so during the period of British what was the case? Colonization was there. British clearly used the model of core periphery development. ठीक है. So some of these areas became core, some of the areas became semi periphery, and some of the areas were simply periphery. Like जो tribal areas थे, hilly areas थे, can we call them as entirely they were periphery? सेमी पेरिफेरी कौन से एरियाज थे जहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की गई? लाइक फॉर एग्जांपल दे डेवलप्ड जमींदारी सिस्टम एटसेट्रा टू प्रमोट एग्रीकल्चर. ठीक है. सो अगेन इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच वाज देयर, उसको सीधे से लिख सकते थे. कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. हाँ, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ये इसी के अंदर. कैन वी से लैंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स. ठीक है. ओके. Controlling population growth is the sustainable solution to environmental problems. Express your views with suitable arguments. जैसे ही मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है इट इज टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड पॉपुलेशन. जैसे ही मैं ये टर्म्स देखता हूं, मेरे दिमाग में सीधा आता है आई इज इक्वल टू पैट. सो आई यहां पर क्या है? इट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट. पी इज व्हाट? पॉपुलेशन साइज. ए इज एसेंशियली एफ्लुएंस or what we call it as the consumption rate, and T refers for technology. अब जैसे ही मेरे दिमाग में ये फ्रेमवर्क है, अब मैं इसको पढ़ूं स्टेटमेंट को. कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. कैन आई से इट इज इनकम्प्लीट? Out of the three dimensions, this statement is just talking about one dimension. Yes or no? So express your views with suitable arguments. वो तुम्हें व्यू बताने के लिए बोल रहा है. And when I will be giving my views, can I say I have to have a balanced approach? I have to show the depth of my understanding. So obviously first part में 50% of your answer main body should be about how population growth को control करने से या फिर manage करने से there can be solutions. Like for example, you can take some of the states where there is high population density, like बिहार का example ले सकते हो, या फिर you can take even countries where there is high population density which is found. ठीक है. And you can talk about how actually because of that, like in countries में क्या हो रहा है जहां पर population growth होगी. Suppose there is population growth is taking place fast. Can we say there is high possibility that economic growth may not be able to take off at the same rate? Yes or no? The classic Malthusian principle, which says that the resource growth is most of the time unable to happen with the same rate as the population growth. And if this is the case, tell me, can we say what will happen with the per capita income? Will it decline? In real terms, it will decline, the per capita income. And does it means that what will happen with poverty? It will increase.
And if people are poor, can we say their tendency to press upon the natural resources, will it be high? Like for example, once Indira Gandhi said that one of the reasons of environmental degradation is poverty. Okay? So again, what will happen? That will make people more press upon the natural resources. Greater exploitation of the natural resources will be taking place. Unscientific exploitation will also be taking place. And thus there will be what? There will be more environmental problems. ठीक है? Like for example, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली अगर हम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जाएं, ईस्ट में, what has happened now, what is happening in many of these villages, population has grown. ठीक है? So as population has grown, many of the wastelands, they are being done what? They are being occupied. ठीक है? लाइक गांव में जाओगे तो जो गांव होते हैं, घर बने हुए हैं बहुत सारे, और बीच में एक पॉन्ड होगा. एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन? द ड्रेनेज ऑफ ऑल दीज हाउसेस एवरीवेयर, इट यूज्ड टू गो एंड ड्रेन इन द पॉन्ड. So this pond was basically what? It was a water harvesting structure. But now slowly there is encroachment upon this land. It is being filled with dump and encroachment is taking place. Houses are being built. So it is leading to what? It is leading to loss of water bodies. Such water harvesting structures are being lost. And what is essentially the outcome? Outcome is that there is lowering of the groundwater table taking place, because these were very necessary structures for the recharge of the groundwater. They were very scientifically designed. So it is promoting unscientific land use, which essentially becomes the cause of environmental degradation. ठीक है? Similarly, will it, if population is increasing, will it force people to intensively cultivate even marginal lands? And if the cultivation doesn't comply with the land capability, can we say, can there be permanent land degradation and even desertification? It is very clearly taking place. ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स को देकर के, कंसेप्ट्स को देकर के, विल प्रूव दैट हाउ इफ वी कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट विल लीड टू सॉल्यूशंस. बट इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी विल डू, 50% of my main body I have to write that we have to understand that the population and resource relationship is intervened by other factors as well. So other factors क्या है? It is the consumption rate, that is the affluence and the technology. ठीक है? उसके एग्जाम्पल्स दे दो. अगर इंडिया में आज की डेट में, इवन इन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश, कैन वी से फर्टिलिटी रेट्स हैव डिक्लाइंड? देयर इज डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट. दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ इज बीइंग मैनेज्ड. However, can we say that still the green revolution, spread of green revolution is continuing? And green revolution की बात करें, can we say it is a technology which is based upon intensive use of resources? Intensive use of the resources. There is over exploitation of the resources which is taking place. So rather than using such technology, can we say, for example, in areas में rice grow किया जाता है with the transplantation method, can we say the better way would be if we can go for systems like rice intensification system, which requires less resources? It is also farmer friendly because in this area the farmers are poor, small. ठीक है? So I'll talk about technology and I'll also talk about the consumption rate. आज की डेट में consumption rate बढ़ रहे हैं because of the westernization phenomena. Take the example of urban areas, water use in urban areas. The per capita water use is very high.
ठीक है. सो नेवर फॉरगेट, इस क्वेश्चन, ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आई डिस्कस्ड विथ मेनी स्टूडेंट्स एंड दिस वाज द प्रॉब्लम. तो टेल मी, किसने ये तीनों डायमेंशंस लिखे हैं? यू हैव रिटन, एक बंदे ने लिखा. बिकॉज अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारे जो मार्क्स होंगे, ये 15 मार्क्स का था और इसमें से लगभग 12 नंबर कंटेंट के थे. So that means out of that 12 numbers of the content, if you have not written the other two parts, you will be evaluated on the basis of 6 marks. ठीक है. So वो dimensions लिखना बहुत जरूरी है, सारे dimensions. Question number 10. Discuss the role of institutional factors in shaping the pattern of agriculture. It is a more straightforward question. Institutional factors की जब हम बात करते हैं तो here, what are the institutional factors? Tell me. Can we start with land tenure? We can definitely start with the land tenure. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, like the land holding size, land reforms which have taken place. All of these are part of the institutional factors. ठीक है. And definitely you can understand, Punjab and Haryana में the average land holding size is larger. There we find there is more development. If you go towards Bihar, the average land holding size is smaller. So there we find it is less developed. Similarly, in areas where there was better agricultural reforms, land reforms जहाँ पे better हुए, चाहे वो बर्गरदार सिस्टम हो या फिर if you talk about land consolidation, it has occurred better in Punjab. So again we'll be finding effect of that. So that is one, एक land tenure system हो सकता है. उसके अलावा भी कुछ हो सकता है. सिलेबस में हमारे बस यही मेंशन है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर. कॉलोनियल फैक्टर्स वो तो हिस्टोरिकल हो गया ना. एक इरिगेशन इज बेसिकली व्हाट? कैन आई से इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन इंडिया में देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन. 3 मेथड्स हैं. One is tank, well and canals. Can we say out of this only one is more institutional type? कौन सा है? It is canal. Is it provided by the institutions? ठीक है. लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के अंदर कैलकुलेट मतलब लिया नहीं जाता इरिगेशन. ठीक है. एग्रीकल्चर में हमेशा एग्रीकल्चर को थिंक करना है तो देयर आर 3 टाइप ऑफ फैक्टर्स, 3 category of factors. One is agro-ecological factors, other is the input and infrastructure factors, and third, if you talk about, is the institutional factors. ठीक है. So we don't take that, but there are several other institutional factors. Like for example, tell me, can we say institutional factors like transportation and storage, institutional factors like agricultural marketing, institutional factors like agricultural pricing system, pricing पॉलिसी, जिसके अंदर प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्या होगा? एग्जिम पॉलिसी भी इसी का पार्ट होगा. दैट इज एसेंशियली ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल. अदर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर. इफ यू टॉक अबाउट अदर एक्सटेंशन फैसिलिटीज,
अदर एक्सटेंशन फैसिलिटी। तो इन सभी में हेडिंग्स के अंदर एग्जाम्पल्स के साथ लिखना था, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, we will be finding Punjab is one of the states of India where the metalled road density is second highest. And it is no wonder that we find that Punjab has more developed agriculture. Similarly, agricultural marketing में it is all marketing जो rural markets होते हैं, they are APMC मंडीज होती हैं, and going by the von Neumann model, the intensity of agriculture will decline as the distance increases, ठीक है, which will affect the agriculture development. So the places which are located near will be more developed. The places which are located far, it will be what? They will be less developed. So those which are near, वहाँ पर कैसा agriculture मिलेगा? Commercial agriculture. Those which are far, there will be finding presence of subsistence agriculture. So take the example of Punjab. There the average distance is less than 6 kilometers. So there we find that commercial agricultural practices have developed. If you take states like Assam, there is almost the distance of 60 kilometers. So there you will be finding that more subsistence agriculture is found. Bihar में APMC मंडीज का framework ही नहीं है. Again you find that there is subsistence agriculture. ठीक है. सिमिलरली एमएसपी एग्रीकल्चर जब प्राइसिंग की बात करेंगे तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, ऑल ऑफ दिस यू हैव टू टॉक अबाउट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स इन विच HYV सीड्स हैव बीन डेवलप्ड. लाइक फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ पल्सेस. इन केस ऑफ पल्सेस वी डू फाइंड पल्सेस एंड मिलेट्स. कैन वी से उसमें HYV टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन सो मच सक्सेसफुल till now, and thus the cropping pattern, the development of these crops, it is again reflective of that. So all of these should be included as a part of institutional factors. So देखो, अब मुझे ये बताओ कि कौन है ऐसा यहाँ पर जिसको लगता है कि because this was 150 marks, does anyone feels कि उसको 75 plus marks मिलेंगे? 50% आई एम टॉकिंग. हाईएस्ट मार्क्स जो कंटेंट में हम लोग देते हैं, और यूपीएससी में भी जैसा हमें मार्क्स दिखता है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं कंटेंट में वो दैट इज 70%. हाईएस्ट दैट इज आई एम टॉकिंग, विच यू हैव रिटन एक्सेप्शनली वेल, तब जाकर के उतने मार्क्स मिलते हैं. So again, why this happened? It is all about revision. पूरा का पूरा पेपर, it will come from what we have studied. It will be all about why, whether how many times I have revised, and also the practice. और ये किया है तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर क्लास के बाद आओगे, सॉरी एग्जाम के बाद आओगे, मेरा डिस्कशन देखोगे और फिर पछताओगे. बिकॉज हर साल की कहानी है. 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब घुमा फिरा के वहीं से आते हैं, विच वी हैव डन इन द क्लास. और इतना पेपर फंसने के बाद मैं सिंपली कहता हूं कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को शर्म आनी चाहिए कि उसके बाद भी तुम लोग नंबर नहीं ला पा रहे. वाई? और इसमें यूपीएससी की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है यूपीएससी. यू आर नॉट राइटिंग करेक्टली, यू आर अनएबल टू रिकॉल एट दैट टाइम. ठीक है, सो विल स्टॉप फॉर टुडे. एंड as you know, the test will start from 18th. What I have done in the test, I want you to prepare both the papers simultaneously. And both the papers का मतलब है
कि होता ये है कि कभी कभी हमें एक पेपर में ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, एक में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है, फिर से हमारे मार्क्स जो हैं वही 240 250 पे फंस जाते हैं। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू परफॉर्म गुड इन ईच ऑफ द पेपर, ठीक है। उसके लिए एक बैलेंस प्रिपरेशन स्टार्ट से ही लेकर के चलते हैं, वेयर वी आर इन अ वीक we are studying both if you talk about paper 1 and we are studying paper 2. So likewise I have designed this year test series. So first like modular test 1 में you will be finding that there are topics, कौन कौन से topics हैं? Economic geography is there, regional planning is there, and I think population geography. Then this is from paper 1, and then there is topics which are from paper 2, and paper 2 में physical setting and contemporary issues, ठीक है। सो लाइकवाइज द पेपर इज डिजाइंड। अब मैं जो पेपर बनाऊंगा उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 तो कंपलसरी होता है, ठीक है, तो वैसा ही बनाऊंगा कुछ कुछ। तो उसमें 2 क्वेश्चंस कंपलसरी रखूंगा, जिसमें एक में इफ यू टॉक अबाउट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1 जो कंपलसरी वाले होते हैं, शॉर्ट नोट्स, इन अनदर विच विल बी कंपलसरी क्वेश्चन। कंपलसरी तो सारे क्वेश्चन होंगे एक्चुअली, but if you talk about in one of the compulsory question, always what I'll do, I like they are doing in paper 2, that means there will be mapping, ठीक है, तो मैपिंग भी होगा उसमें, एंड देयर विल बी लाइक 3 क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। लाइक अगर देखो पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो उसमें 4 ही क्वेश्चन होते हैं, एक मैपिंग का और 3 शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वैसा होगा, तो हम दैट मीन्स हम टोटल अगर हम देखें तो 8 टेस्ट ऐसे सॉल्व करेंगे वेयर देयर विल बी इंक्लूजन ऑफ मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग को अभी से करना चालू करो, यू रिवाइज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इटसेल्फ। लास्ट ईयर द मैपिंग वाज वेरी इजी, बट स्टिल आई फाउंड देयर वर स्टूडेंट्स जिन्होंने दिन का सही जो हो रहा है वो 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज, कम से कम वो 7-8 एंट्रीज सही होनी चाहिए, because the last year mapping was quite easy, so it should not happen, ठीक है। Okay, so goodbye, take care, and if you have to meet me, show me your copies, you are welcome. Today I'll be there in the office till 6 p.m. Okay.